Morning, everybody. So let me start now. Till now, we have completed 4 units very well, I think. First, introduction and basic index properties of the soil. That chapter is very important. Please go through it. Except what classification of soils, each and everything I taught you in that topic, isn't it? And then we started compaction, I think, and that also we did with a graph. Third unit was permeability, that also we did, and after that recently we completed compaction, consolidation. Okay, so these, please go through all the chapters. If you need any material, any problem, anything is there, please feel free to ask me that one. Okay, so now of course a little bit topics are left in each and every unit, I think, but that I can cover in the end. So now what the thing left is, now 2 chapters are there still. One is shear strength of soil, and second is earth pressure. One is shear strength of soil, next is earth pressure. So as far as shear strength of soil is concerned, so this concept is very important because as I told you, see what happens, why you people add steel to the concrete? You people add steel to the concrete, no? Reinforced steel concrete, you have studied. So why it is so? जब भी आप कॉलम देखो, कंक्रीट के कॉलम में स्टील के रॉड्स रहते, सो फैब्रिकेशन करते स्टील से. व्हाई इट इज सो? क्लियरली why it is so? Why अभी मैं I'm not explaining this one yet. So strength, okay, Sonali is saying strength, but which strength? देखो कंक्रीट वैसा ही आप कॉलम बनाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय स्टील के रॉड्स डालते हैं अंदर, कितने डायमीटर के डालना, क्या स्पेसिंग पे डालना, ये सब आरसीसी में पढ़े आप. सो अब मुझे ये बोलो कि व्हाई स्टील रॉड्स आर पुट इन द कंक्रीट? व्हाट इज द रीजन? कैन द बिल्डिंग और कॉलम सस्टेन विदाउट द यूज ऑफ स्टील रॉड्स? नो. व्हाई सो? Why you are adding this steel to the concrete? What is the main reason? This is the expected question. RCC पढ़े नहीं आप लोग अभी? Carrying the load of the building. The load of the building? Yes, sir. Carrying the load of the building. Load of the building concrete का steel क्यों डाल रहे हैं? Only concrete cannot hold the whatever the load on building. That concrete cannot hold. Of course, it is right, but not the correct. That's why precise answer is not that. Now tell me, concrete strong किसमें रहता? Compression load. Yes, concrete is strong in compressive. तो कितना भी बिल्डिंग आपका पूरा कॉम्प्रेसिव लोड है तो कंक्रीट आपका आसानी से ले सकता, वहां स्टील की जरूरत नहीं है. लेकिन जब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात आती तो स्टील कंक्रीट फेल हो जाता. यस यस सोनाली. सो कंक्रीट जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ओके, लेकिन जब इसकी बात आती टेंसाइल स्ट्रेंथ की तो कंक्रीट जो है टेंसाइल के लिए वीक है. तो टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्ट करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ लेने के लिए हम लोग क्या करते, स्टील ऐड करते, विच इज वेरी मच strong in taking tensile forces, which is very much strong in taking tensile forces. What is tensile force? What is compressive force? Just you imagine it. Okay, so concrete is strong in compression, steel is strong in tension. Yes, anybody? Any doubts? कुछ आराम से पूछो. सिलेबस का छोड़ो तुम, सिलेबस का मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको within 8 days I will complete entire GT syllabus for you people. तो कंप्लीट करे जैसा है क्या? आप एक दिन में पढ़ के पास हो जा रहे, वो पास हो गए जैसा है क्या? नहीं है. मैं अगर से पढ़ाऊं आपको तो आई शुड टीच यू इन डिटेल. आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, और आप पढ़े तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि समथिंग यू शुड एबल टू राइट, अंडरस्टैंड द थिंग्स, कॉन्सेप्ट द थिंग्स.
So don't think about the exam or passing, failing notes, all these things at all. So here, this is the basic thing you should know. So concrete is strong in compression, whereas steel is strong in tensile. So to take both the loads to, resist both the loads, what we do, we add, of course, how much we have to add. So it all depends on, again, shear force at that beam, bending moment at that beam. It all depends on that one, how much at that particular point. We calculate this one, area of steel you calculate, then provide 16 mm bars at a spacing of 12 mm center to center, like this you do know. So all these things you do know. So now, after all these things, what is the conclusion here is concrete is strong in compression, whereas steel is strong in tension. And what about the soil now? तो सॉइल जो है, सी कंक्रीट आप बनाते खुद, आप जैसा मन चाहे वैसा बना सकते कंक्रीट को, है ना। आप इतना डालो, ये एडमिक्सचर डालो, कंक्रीट स्ट्रेंथ पड़ा है, आपको इतना स्ट्रेंथ होना, M20 होना, M30 होना, M40 होना. आरसीसी नाही झालं का तुम्हाला अजून? सर नेक्स्ट सेमिस्टर मध्ये नाही का तुम्हाला आरसीसी? पुढच्या सेमिस्टर मध्ये आहे का? ओके ओके, येस सर. हा, पुढच्या सेमिस्टर मध्ये असतं शिकतात. ओके, आता तुम्ही स्टील शिकलात ना. ओके, नेक्स्ट सेमिस्टर विल लर्न आरसीसी, आय थिंक. तर आरसीसी हेच आहे, आरसीसी रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सिमेंट. म्हणजे काय आरसीसी म्हणजे काय? फक्त कॉन्क्रीट तुमचं कोणतं स्ट्रेंथ, कॉन्क्रीट स्ट्रॉंग आहे कॉम्प्रेशन, पण आम्ही स्टील ऍड करतो काय म्हणजे कॉन्क्रीट टेन्साइल मध्ये खूप वीक आहे. Of course, you will study in detail next semester, but you see here, of course, you didn't study RCC, I can agree, but you have studied concrete technology, है ना? ऐसे सर पढ़ा है ना आपको? हाँ, तो कंक्रीट में देखिए आप मनचाहा मतलब कोई भी कंक्रीट तैयार कर सकते, M20 करते, M30 करते, कभी कभी आप एडमिक्सचर्स डालते, स्पेशल टाइप के डाल के आप M100 तक कर रहे, आज तक M200 तक जा रहे, वाटर सीमेंट रेशियो कम रख के, नए नए टाइप के एडमिक्सचर्स डाल के. तो कंक्रीट आप खुद बना सकते. स्टील भी वैसा ही है, स्टील का ओर मिलता, आप फैक्ट्री में जैसा चाहे, जितने स्ट्रेंथ का चाहे स्टील बना सकते. नाउ टेल मी द सेम थिंग फॉर सॉइल. सॉइल आप बना सकते क्या? मुझे यही स्ट्रेंथ का चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही लोड चाहिए, इसमें टेंशन नहीं रहना, इसमें कॉम्प्रेशन नहीं रहना, ऐसा कुछ आप सॉइल में सोच सकते क्या? नो. सॉइल इज नेचुरली अवेलेबल. सॉइल इज नेचुरली अवेलेबल. तो सॉइल में क्या रहता मालूम है? आप अपने जगह अपन सॉइल रहा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. सॉइल अपने जगह रहा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. लेकिन जब हमको रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करना रहता, जब आपको स्लोप देना रहता, कहीं कहीं एक्सकेवेशन करना पड़ता, तो वहां पर सॉइल का स्ट्रेंथ मालूम होता. So there it is very important. Soil fail हो रहा क्या नहीं. So there the failure occurs. And remember, soil is totally concerned with shear stress or shear strength of shear stress. यहाँ पर compression और tensile may be there, but very negligible. समझ में आपको? compression tension जो भी है ये बहुत negligible है. Soil is totally रिवॉल्व अराउंड shear strength of soil. तो shear कैसा रहता है? देखिए, जो आप टेंसाइल में लगाते ऐसा लोड लगाते, खींचते, समझो इधर भी खींचते तो एक्सटेंशन हो जाता. कॉम्प्रेशन में क्या करते? दोनों तरफ से लोड लगाते, दबाते उसको. लेकिन जब बात सॉइल की आती, अगर से सॉइल नॉर्मल कंडीशन में तो अपने जगह अपना आराम से है. But the thing is, when you want to construct some slope, you want to make some excavation, तो वहां पर सॉइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो वहां जो स्ट्रेंथ आपको निकालना पड़ता है, जिस स्ट्रेंथ के बारे में यू हैव टू स्टडी, दैट स्ट्रेंथ इज shear strength. That strength is shear strength. अभी shear strength होता कैसा सॉइल में? देखिए, shear strength एक दूसरे को रगड़ने से होता है. The best example is कैंची लो, आप पेपर कट करो, ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन एक दूसरे को कट करते जाते, that is the shear stress. shear stress भी पढ़े आप?
What is tensile stress, what is normal compression stress and shear stress. तो यहाँ पर सॉइल में shear strength का अपना importance है. Shear strength plays a very very important role. Now the question arises, in soil, how the shear strength occurs? Actually होता क्या है soil में? तो soil में दो चीजें होते हैं, याद रखो. एक होता है friction, दूसरा होता है कोहेजन और एडेजन. फ्रिक्शन आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एक रेजिस्टिंग फोर्स करता है, रफनेस की वजह से आता है. तो ये फ्रिक्शन भी फिर दो तरीके से होता, या तो मॉलिक्यूल्स की तरह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे उसकी वजह से भी फ्रिक्शन आता है कभी कभी. देखिए एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल एक दूसरे को टकरा रहे तो वहां फ्रिक्शन होता, या आप एक्सटर्नल लोड कुछ अप्लाई कर रहे, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से फ्रिक्शन होता. और एडेजन क्या है, पार्टिकल एक दूसरे के अट्रैक्शन से नजदीक आ जाता हो जाता. सो यहां पर एडेजन और कोहेजन आई एम टेलिंग यू. सो shear strength is mainly revolve around two things. One is friction, another is cohesion. One is friction, another is cohesion. And we have to find the shear strength means we have to find these two only. Okay, so जो cohesion रहता, it is denoted by C. It is denoted by C. cohesion जो रहता है एडिशन की वजह. और दूसरा जो फ्रिक्शन है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं हम. एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप पढ़े सो ये सब फ्रिक्शन चैप्टर डिटेल में, एंड दैट इज phi. That is phi. So a C और phi, ये दोनों को बोलते shear parameters of the soil. C and phi are called shear parameter of the soil. C निकालो phi निकालो, एक बार C निकल गया एक बार phi निकल गया, आपके हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए सॉइल मैकेनिक्स में. So shear strength of soil is very very important. It revolves around two things. One is friction, another is cohesion. Friction, friction is angle of friction, that is phi, and cohesion is C. So C and phi, C for cohesion, phi for angle of friction. C and phi are called, what they are called? They are called shear strength parameters. याद रखो, बहुत बार वाइवा में पूछते हैं what are the shear strength parameters, किसी को मालूम नहीं रहता. So shear strength parameters are C and phi. C for cohesion and phi is for angle of shearing resistance. Angle of shearing resistance. तो यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. 1 minute टाइम आई विल गिव यू. आप समझो, ये नोट्स वोट्स ये सब छोड़ो, ये क्या मैं बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह याद रखो. और ये चैप्टर में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसमें क्या है, बहुत सारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स है सिर्फ. हाँ, और वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ, वो आप नहीं करे खुद तो समझ में नहीं आता. दूसरी बात, प्रॉब्लम्स 90% इसमें सब ग्राफ के ऊपर मतलब बेस्ड है. इसीलिए 8-10 ग्राफ के पेपर खरीद के रखो, या अपना पुराने लैब के रिकॉर्ड बुक से निकाल के रखो. और मैं जब कोई चीज करने के लिए बोलता हूँ, यहाँ क्लास में कराता हूँ, प्रैक्टिस करो आप, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. याद रखो, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज यू कैन आस्क. 1 minute टाइम आई विल गिव. Okay, now what I told you, soil is mainly concerned with shear strength of soil, and shear strength mainly divides, concerned is about two parts. One is cohesion, another is angle of friction or friction. So now the thing is, C is cohesion, phi is angle of friction.
Now, soil is also of two types generally you will get. One is cohesionless soil, other is cohesive soil. One is cohesionless soil, other is cohesive soil. Cohesionless soil means इसमें cohesion नहीं रहता, सी इसमें जीरो रहता, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहता, फ्रिक्शन की वजह से स्टेयर स्ट्रेंथ, एंड सैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन. Sand is the best example of this one. Whereas in some portions, silty soil, clay soil, where friction is nil, their cohesion is more, and such soils are called cohesive soils. The best examples for cohesive soil is clay, and for the cohesionless soil, it is sand. For cohesionless soil, it is sand. ओके ठीक है. क्या स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे ना तुम लोग, चुप इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने में कोई मतलब नहीं दिख रहा मेरे को. हार्डली 18 to 20 स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है तुम लोग. क्या पढ़ाना तुम लोगों को, बोलो. इंटरेस्ट ही नहीं है तुम लोगों को. ऐसा है तो हम लोग भी चुप ऐसे ही कुछ तो पढ़ा के सिलेबस खत्म करते. मतलब क्या है फिर, आपको अभी डेफिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ, मैं इतना डिटेल में 20 मिनट से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, फिर भी ज्वाइन नहीं होते आप लोग. जाने छोड़ो. नाउ देखिए, ये है फेल्योर सरफेस. ऐसा कोने की वजह से ऐसे सॉइल फेल होता. The shear strength of soil mass is the internal resistance per unit area that the soil mass can offer to resist failure and sliding along any plane inside it. Just like stress it is. Okay. Now, Mohr's Coulomb failure criteria. Mohr's Coulomb criteria क्या क्या है ये? Mohr presented a theory for the rupture in materials that contain because of initial combination of normal and shear stress, and not from either maximum normal or near stress. So tau f is the function of means tau means here shear stress, sigma means normal stress. Means यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि ओके सो यहाँ पर क्या बोल रहा हो कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है इसकी वजह से भी shear stress होता. तो shear stress is function of normal stress. Shear stress is function of normal stress. The failure envelope, इसके और नोट्स दूंगा मैं, और डिटेल में जाऊंगा. See, it all depends on you people. ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा और एक ही लाइन में समझ में आएगा, ऐसा नहीं है. इतना आसान नहीं रहता कोई चीज. मैं आपको बता दूंगा और आपको shear strength के आप मास्टर हो जाओगे, ऐसा नहीं होता. सो इवन मेरे को भी 1-2 बार रिपीट करना पड़ता, बार बार बोलना पड़ता. तो सबसे बेहतर चीज क्या है कि आपको खुद पढ़ना पड़ता, तब जाके 2-3 बार मैं समझाने के बाद, आपके पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स. ओके. तो थोड़ा मुश्किल है shear strength, सॉइल ही मुश्किल है क्योंकि कंक्रीट और स्टील की चीजें दिखते हैं आपको. यू कैन इमेजिन इट. सॉइल के अब shear strength कैसा होता है इतनी छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में, ये इमेजिन करना इतना आसान नहीं. Okay. The failure envelope defined as above by the equation is the curved one, of course. So now for most soil mechanics problems, it is sufficient to approximate the shear stress on the failure plane as a linear function of the normal stress. मतलब क्या है, shear stress और normal stress एक linear equation से देते. Y is equal to mx plus c, स्ट्रेट लाइन है नहीं ज्योमेट्री में. उसी तरह tau f is equal to c plus sigma tan phi. This is the standard formula. Tau f is equal to c plus sigma tan phi. Tau f is equal to c plus sigma tan phi, where c is equal to cohesion. Where c is equal to cohesion. Tau f is equal to shear strength. Tau f is equal to shear strength. And sigma is normal stress. याद रखो, sigma is normal stress, tau is shear stress. हम यूज करते. और c क्या है यहाँ पर, कोहेजन है, और phi जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है. तो ये है मोहर कोलम्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर shear stress और shear strength. Shear strength tau f is given by c plus sigma tan phi,
where tau f is shear strength, sigma is normal strength, c is cohesion और tan phi में phi जो है angle of internal friction. So this portion is because of friction and this portion is because of cohesion. अगर से सॉइल कोहेसिव है तो C ज्यादा रहता, phi कम होते जाता, लेकिन अगर से सॉइल कोहेजन लेस है तो C क्या हो जाता, 0 हो जाता और ये वैल्यू बढ़ते जाता. The value of C for sand, inorganic silt is 0. Sand रहा, silt रहा inorganic, then C is equal to 0. C is equal to 0. So generally we draw a diagram like this, normal stress versus shear stress. You will get like this one. This is the angle phi and this is C. याद रखो, कभी भी आप अगर से एक डायग्राम बनाए, ये नॉर्मल स्ट्रेस ले लो एक्स एक्सिस पे, ये बेसिस है, सारे टेस्ट इसी बेसिक पे हम बनाते. So on the x-axis you take normal stress and on the y-axis you take shear stress. And when you draw the diagram, when you draw the graph, so whatever the angle it makes with the horizontal slope, that is called phi. तो phi और c कैसा निकालते देखो, और ये जो इंटरप्शन है, this is C, cohesion. This is C, cohesion. So this is phi and this is C, cohesion. I hope यहाँ तक आपको हर चीज क्लियर हो गया. ये तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आपको. Now coming to this point, the shear strength of a soil is basically made up of following components. So shear strength दो components बताया था मैं आपको, ये एक है cohesion, दूसरा है friction. Friction भी फिर दो parts में है. So the shear strength of a soil is basically made up of following components. One is friction, second is cohesion. Friction is again in two parts. First is frictional components due to interlocking of soil particles. Frictional components due to interlocking of soil particles. And second is friction between the soil particles when subjected to normal stress. मतलब friction ही है टोटल. फ्रिक्शन को भी दो पार्ट्स में है, एक अपने आप इंटरलॉकिंग होने से पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर मतलब टकरा जा रहे तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता, दैट यू हैव टू कंसीडर. एंड सेकंड इज व्हेन यू अप्लाई द नॉर्मल स्ट्रेस, नो देयर विल बी रेजिस्टेंस विद इन द सॉइल for this stress and that stress is also causes friction. So friction is divided into two parts. One is component due to interlocking of soil particles and second is friction between the soil particles when subjected to normal stress. When subjected to normal stress. Now third is cohesion between the surface of the soil particles. तो मालूम है आपको cohesion soil particles के बीच में जो रहेगा, because of that also shear strength is happens. So now जो basically आप याद रखो, shear strength is having two components. One is friction, second is cohesion. फ्रिक्शन भी फिर दो है, एक आपस में इंटरलॉकिंग होने से वजह से है, दूसरा when you apply the normal stress and because of that also friction takes place. तो यहां तक आपको क्लियर है. Now the knowledge of shear strength of a soil is essential to analyze problems related to bearing capacity of foundations, design of retaining walls, design of pavements, slope stability problems. So knowledge of shear strength is very much needed for all these things. Bearing capacity, foundation का bearing capacity निकालना है, या अगले सेमेस्टर में पढ़ते हैं आप. This very important topic, bearing capacity. गेट में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर. सो बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपको शियर स्ट्रेंथ का नॉलेज होना, शियर स्ट्रेंथ क्या है मालूम होना बहुत जरूरी है. सेकंड इज डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स. एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द रिटेनिंग वॉल, देयर आल्सो द प्रेशर ऑफ सॉइल मैटर्स अ लॉट. नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स, रोड्स, slope stability problems when inclination is there. So all these things you should know. And if you are having the knowledge of shear stress very well, shear strength, that is going to help you for all these things in these applications. The shear strength is in cohesionless soil results from intergranular friction alone, whereas in all other soil it results both interface as well as cohesion. देखिए shear strength जो है सैंड में
सिर्फ इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन, आपस में कोई नॉर्मल स्ट्रेस भी नहीं, यहाँ पर आपस में जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप करते, उसकी वजह से सैंड में शियर स्ट्रेंथ होता। और दूसरे सभी सॉइल में कोहेजन भी रहता और दूसरा इंटरनल फ्रिक्शन भी रहता, इसलिए ऑलमोस्ट ऑल सभी सॉइल को C5 सॉइल बोलते, मतलब उसमें C भी है और 5 भी है। लेकिन सैंड जो है उसमें क्या रहता, सैंड में कोहेजन बिल्कुल नहीं रहता, C0 रहता। इट इज द फंक्शन ऑफ 5 ओनली, इट इज द फंक्शन ऑफ 5 ओनली। वेयर एज इन केस ऑफ कोहेजन clay, so clay is a purely the function of clearly is the function of this cohesion, that is I mean clay में सिर्फ cohesion रहता। what is cohesion I will tell you, what is cohesion I will tell you, then how the graph of cohesionless soil is there, cohesive soil is there, that also we will go through. So please again 30 seconds time I will give. If you have any doubts you can ask or write in the chat box. Okay, so now we will start with cohesion. Okay, Snell, thank you beta. Now we will go for cohesion क्या है आखिर। फ्रिक्शन आपको मालूम है, हाँ? देखिए कोई फोर्स अप्लाई कर रहा तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है बाजू की तरफ से। कितना हार्ड सरफेस रहेगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा, सरफेस स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा। ये तो आप पढ़े, फ्रिक्शन बहुत डिटेल में मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कोहेजन क्या है। What is cohesion? Cohesion, it is the property of a soil which holds the particles together in a soil mass, mainly due to interparticle molecular attraction and bonds. Because of bonds and this molecular attraction, no adhesion, so particles are close together, they are bonded. Whatever the strength is developed because of this, it is called cohesion, and it is maximum in clay, silty, I mean very finer things. The exact nature of the surface forces helpful in causing cohesion is not known. See, this is the problem. Why cohesion is not forming, yet not discovered, yet not found. So there is a lot of scope for research work in geotechnical engineering. Suppose any one of you want to become professor, want to become teacher, or I mean want to learn research activities. So geotechnical is the best branch in MTech, I will tell you. Very rare people you find here, and in research maximum scope is there. So how cohesion forms, it's a very important thing, still not discovered yet. Nobody knows what is the exact nature of the surfaces helpful for causing cohesion. It is not a constant soil property, but it is a function of load carried by soil structure or interparticle load. Of course, it may not be constant, but it is the function of the whatever the load it is carrying. So this is all about cohesion. Remember करो, clay में cohesion ज्यादा रहता, इसलिए उसको cohesive soil बोलते, जबकि sand में ये cohesion कम रहता, इसलिए को sand को बोलते cohesionless soil, cohesionless soil. ओके, तो कोहेजनलेस सॉइल, अभी मैं आपको बोला एग्जांपल दिया, इसका ग्राफ कैसा रहता, इसका जो इक्वेशन है y = mx + c और tau f = c + सिग्मा tan phi कैसे बनता। देखिए ये है आपका नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, वाई एक्सिस पे क्या है, शियर स्ट्रेस है। Got it? Normal stress and as well as shear stress, both the things you know very well. Now, for
कोहेजनलेस सॉइल C is 0 मीन्स यहाँ कोई इंटरसेप्ट नहीं आता, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से रहता. So this is the failure envelope of cohesionless soil. Or and if you take this tau is equal to sigma tan C plus sigma tan phi, but since C is equal to 0 here, C is equal to 0 here, so tau F is equal to sigma tan phi, or tan phi is equal to tau by sigma. So this is the phi. Therefore, tan phi is equal to tau by sigma. So shear stress by normal stress is give you phi here. So this is similar to y is equal to mx plus c in geometry. Mx plus c in geometry. Mx means tan, m means tan phi here. X is this one, normal stress, and c is cohesion. C is cohesion, whereas this tau is shear stress. So if you have any doubts regarding the graph, you can ask. So this is the graph for cohesionless soil. Sir, graph फिर से explain करो please. Graph Yes sir. ग्राफ काय नाही बेटा, बघा ग्राफ आम्ही कसं करतो तर शियर स्ट्रेंथ मध्ये एक्स ऍक्सिस वर नॉर्मल स्ट्रेस घेतो, वाय ऍक्सिस वर शियर स्ट्रेस घेतो. कुठं कोहेजनलेस सॉइल राहतंय तिथं C0 राहणार. ऍक्च्युअली सी असं येणार, सी बघा हे C5 सॉइलचं ग्राफ आहे, हे नॉर्मल स्ट्रेस आहे, हे शियर स्ट्रेस आहे, हे असं येणार लाईन. पण इथं C0 असल्याकरता हे पोर्शन काही राहणार नाही. अँड युअर फिगर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, ओरिजिन ओनली. y is equal to mx असं फिगर अंतर कसं ओरिजिन पास होत आहे. कंपेअर दिस विथ जॉमेट्री. सो दिस इज द फेल्युअर एनवलप. Tau, this is the angle phi, this is normal stress, this is shear stress, this is shear stress. Okay, so now cohesive soil आगे है. अगर से सॉइल कोहेजिव है तो tau is equal to C plus sigma tan phi, लेकिन यहाँ पर सिग्मा 0 है. Tau is equal to C. Tau is equal to C is a straight line parallel to x-axis, and this is your cohesion here. So this is the best example of clay. Clay is the cohesive soil. So cohesive soil चा ग्राफ कसं राहणार, you should have idea. Cohesionless soil चा ग्राफ कसं राहणार, that also you should have idea. So these are the graphs. X-axis normal stress, y-axis shear stress. X-axis normal stress, y-axis shear stress. So now here C will get, but phi is 0, whereas here C is 0, phi you will get. Phi you will get. And for a C5 soil, means it is cohesive as well as frictional. The graph is given by like this. The graph is given by like this. This is the C intercept. This is the C intercept, and whatever this line makes angle with the horizontal is called phi. Is called phi. So I hope all the three graphs are clear to you. First is cohesionless soil, second is cohesive soil, और तीसरा है C5 soil. Cohesionless soil में क्या होता, C0 रहता, इसीलिए आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता. जबकि कोहेजिव सॉइल में क्या होता, C तो रहता लेकिन phi 0 रहता, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता. आपको ग्राफ का आइडिया होना बहुत जरूरी है. एंड थर्ड वन इज C5 सॉइल. ऐसा कोई सॉइल नहीं है जो प्योरली क्ले है, और ऐसा कोई सॉइल नहीं है जो प्योरली सैंड है. इन बिटवीन कंडीशंस आर आल्सो देयर. In between conditions are also there, and these are given by C5 soil. These are given by C5 soil. So Mohr circle also you have studied, no need of telling in detail. So please now after this have a break of 1-2 minutes. Now you tell me why any doubt, if you have any doubt. If you have any doubt on shear strength, you can call. सर मोर सर्कल नाही झाला आम्हाला, ते सिलेबस मधून काढून टाकलं होतं पहिले. काय झालं बेटा? मोर सर्कल. हा, मोर सर्कल काढून टाकलं होतं सिलेबस मधून. नाही शिकला नाही का मोर सर्कल? नाही.
ओके ओके, आय विल टीच दॅम. मोहर सर्कल इम्पॉर्टंट आहे बेटा, सॉम मध्ये होतोय. एनिवे आय विल टेल यू व्हॉट इज मोहर सर्कल. काढून टाकलं सिलेबस मधलं. ओके ओके, मी शिकवतो घ्या, सांगतो काय पाहिजे झालं तर तुम्हाला. पण ह्या चॅप्टर शिकायला तुम्ही, मी पुन्हा सांगतो, आपल्या बरोबर ड्रॉइंगचे इन्स्ट्रुमेंट, स्केल, कंपास, पेन्सिल, रबर आणि पेपर, ग्राफ शीट बरोबर ठेवून घेऊन बसा आणि ड्रॉ करत जा, तरच तुम्हाला हे चॅप्टर कळणार. झालंय चॅप्टर मध्ये काय नाहीच. हे झाले की फक्त एक्सपेरिमेंट्स आहेत, ते एक्सपेरिमेंट मी सांगून टाकतो, त्याचे रिडिंग दाखवतो, 2-4 प्रॉब्लेम करून करतो, संपून जाते. पण तुम्हाला कळावं तर तुम्ही, इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस thoroughly or perfectly, means you have to draw the graphs. कसं ड्रॉ करायचं. Okay, now have a break of 2-3 minutes and then we will